Hi, everybody. We are almost uh, heading towards the end of December 2024. And as promised, that I will help you all with the studies of class 11th commerce subject, especially with the business studies. So, here we are starting this course, and I think we might complete the entire sessions course within like a month or so. So, starting with the foundation of business, we need to understand सबसे पहली बात क्या होती है कि बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपने कभी ना कभी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 10 तक आपने चीज़ों को पढ़ा है. मैथ्स एंड अकाउंट्स से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस किए हैं. इकोनॉमिक्स आपने सोशल स्टडीज़ के पार्ट में पढ़ा है. यू नो व्हाट इकोनॉमिक मीन मीडियन मोड आप कैसे निकालते हो, आप स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हो. पार्शियली इट इज़ टॉट इन फॉर्म ऑफ मैथ्स एंड सोशल साइंसेस इन द जूनियर क्लासेस. और बाकी सारे सब्जेक्ट्स से तो आप एक्वेंटेड रहते हो बचपन से ही. बट 11th में आके जो मेजर सब्जेक्ट चेंज आता है दैट इज़ दिस बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का जो हम स्टडी करते हैं, विच इज़ कॉल्ड बिजनेस स्टडी. हाउ अ बिजनेस इज स्टार्टेड, व्हाट इज़ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, forms of business organizations, how they form different companies, how they work on a sole proprietorship basis, उनकी कंपनीज के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या बेसिक नॉलेज हमको चाहिए रहता है. देन बिजनेस सर्विसेज, आजकल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लगने लगे हैं, तो एवरीबडी इज़ समवेयर एक्वेंटेड विद द टर्मिनोलॉजीज. बट चूँकि 11th में आगे ये सब्जेक्ट आपके लिए नया हो जाता है, तो यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है, what's new. And actually people get confused about the content. They mix it up with economics and accountancy और business studies को theoretical subject होने की वजह से last moment के लिए छोड़ देते हैं. But then this particular subject, अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें तो it helps you form the foundation of your journey with commerce and its allied subjects, and it also helps you understand the meaning of business, trade and commerce in totality. जिन लोग CA के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेटर ऑन ICWA के लिए प्रिपेयर करते हैं, CS के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट जो है इट्स एक्ट्स एज अ बाइबल. दिस एक्ट्स एज अ रूल बुक, दिस एक्ट्स एज योर नॉलेज बैंक. तो स्टार्ट करते हैं हम. वी आर रेफरिंग टू द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय NCERT. तो NCERT की जो बुक है, आई एम टेकिंग दैट ओनली एज अ रेफरेंस मटीरियल एंड गोइंग बाय द टॉपिक्स. सो जो इसका फर्स्ट यूनिट है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, वी विल बी कवरिंग मोस्टली जो अभी हमने टॉपिक्स बोला. बिजनेस सर्विसेज के बाद emerging modes of business as in the present scenario and context, and also social responsibilities of business and business ethics. So let us start with the first topic, foundation of business के first chapter से, wherein they are defining business, trade and commerce. तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ बिजनेस को अगर आप समझते हैं तो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस डेट्स बैक टू द एंशियंट डेज. हम अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट हुई, जब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ इंडिया में थ्रू सी रूट्स, थ्रू लैंड, अक्रॉस बॉर्डर बिजनेस. एंड ये सारी चीज़ें किसने स्टार्ट की, डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने.
तो जैसे अगर हमने कई बारी सुना होगा कि पुराने जो बिजनेस पीपल थे वो हुंडी सिस्टम मेंटेन करते थे, एंड दैट इज़ दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स को डॉक्यूमेंट किया गया था. उसके पहले बाटर सिस्टम वाज प्रिवेलेंट. सो written and recorded commercial activities, they, through the archaeological evidences, they date back to the cultures of Mohenjo-daro and Harappa days. और इसके हमारे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, बिकॉज जो इंडो आर्यंस थे या एशियन दूसरी डायनेस्टीज़ थी, जैसे चाइनीज़ डायनेस्टीज़ थी और मुगल डायनेस्टीज़ थी, all of them, they did, business with us. They did trade activities with us. क्योंकि we were an agriculture dominated, society at that point of time. एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत कुछ था. स्पाइसेस थे, मेडिसिनल प्लांट्स थे, पॉटरी थी, ज्वेलरी थी, टेक्सटाइल था. ये सारी चीज़ों का हमें हिस्ट्री में बैकडेट्स भी देखने के लिए मिलता है ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के फॉर्म पे. तो टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, इट इज़ गुड टू रिलेटेड टू द सोशल साइंस जो हम पढ़ते आ रहे थे कि इस किस्म का था, ऐसा था. बट हाउ इट स्टार्टेड, हाउ द सिस्टम्स आर केप्ट, हाउ द राइज ऑफ intermediaries happened, and what was exactly the hundi system जो merchant communities normally prefer करते थे उस टाइम के. how the things were traded, how were they transported, how were the merchant corporations formed, major trade centers क्या थे, major trade items क्या थे, और उनके अलावा इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर्ल्ड इकॉनमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था. ऐसे क्या खासियत थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ड्यूरिंग दैट एरा, जो मिडीवल एरा था, वो इंडिया से ट्रेड क्यों करता था, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट. सो ऑल ऑफ इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस. इसके अलावा when we come to the concept and nature of business, this explains how the society developed the concept of business gradually, how they kept busy with their occupations, how they kept busy with how people regularly got or kept themselves engaged with activities which would yield something in return to them. So to earn the breads and butters and to earn the, things to continue with their livelihood, whether it was in form of a barter or it was in form of a currency exchange or a monetary value exchange, it started from the ancient days itself. तो जब हम बात करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स की, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स, कौन सी सिटीज़ इम्पॉर्टेंट थी, किस किस सिटी में हमको प्रूफ मिला है कि ये काफ़ी एंशियंट टाइम से बिजनेस सेंटर्स रहे होंगे, ट्रेड सेंटर्स रहे होंगे, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, और नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन दी इंडियन कंटेक्स्ट कैसे डेवलप हुआ, ग्रेजुअली कैसे मूव ऑन किया, एंड what were the main characteristics of those business activities, how things changed, business functions कैसे change हुए, enterprise level पे आके कैसे classify हुए, risk क्या क्या involved थे, comparison of different profession या employment segments क्या थे. ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे नेचर एंड कॉन्सेप्ट में. देन बिजनेस
में बहुत सारी चीज़ें हैं कि whether you are manufacturing a thing, you are producing a thing, it is a natural thing that you're extracting, or how much of a skill is required to conduct that particular business, what are the qualifications required, what are the rewards or the returns that one can expect, and whether it requires any kind of additional documentation, registration, or support systems, which are called the ancillary units or the tertiary units or the auxiliaries, which start affecting the business in the long run, positively as well as negatively. All this will be understood in the nature and concept of business. Then we've heard a lot about Make in India, the concept that was recently started by the present government in India. So, how they define industries, trades, commerce, what are the goods and services that can be, that are legal to do, that can be developed for, financial improvement, financial betterment, and also what are the basic requirements to carry out the goods trade or the service trade or some auxiliary industrial, which are not directly providing us with the finished good or raw materials, but they are providing some sort of parts or spare parts which will be used in the industries to make something which will be finally used by the consumers. So all these requires to be understood. uh, how trade and commerce is carried out, what should be the level next, how should it actually operate, what should be the objectives of the business, how do you ascertain the risk factors, how do you ascertain uh, the shelf life of the goods and products that you are dealing in. Then when you are analyzing the risks, what will be the essential risks, what will be the uncertain risks, what would be the dependency of your business upon those risks, how will the business continue in case there is some sort of risk is met with, and how would that risk be mitigated, or how strongly can it be dealt with. So all these factors, these are all theoretical concepts, but when you start a business, you need to know all these basic factors. What should be the selection or the line of business pertaining to the geographical presence of you and the raw materials or the products you are planning to deal in? What should be the size of the organization? What should be the um, basic outlining of the thing, how to make a choice of people who would be involved in the business directly or indirectly. Of course, location will matter, and how will the finances be flowing in, what would be the physical facilities, if you're starting an industry, what should be the layout of the industry, what should be the layout of the plant, what should be the criteria on which the workforce may be selected, how would you plan the finances, the taxes, the enhancement capitals, launching of a particular business in a wider term, making it into branches, enterprise, all these things will be covered in the first chapter. So mostly I do understand that you'll all have gone through the first chapter, and
this deals with the basics of the business and people think it is very easy, but when you sit down to write the exam, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हो तो सबसे बड़ा क्या होता है कन्फ्यूजन की सारी चीज़ें आप एक एक टर्म में कंफ्यूज होने लगते हो, तो उस कन्फ्यूजन को कैसे डील करना है, वी विल अंडरस्टैंड दोज टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो. You can send me your questions. You can write your questions as comments here. And I would request you to share these videos with the people you think would need these videos to understand the topics. अभी मैंने बहुत क्विकली इसको समराइज़ किया है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिंपल चैप्टर्स को टीचर्स आप पे छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए कि आप खुद उसको रीड आउट कर सकते हो. बट अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम्स में आपके पास 2.5 months का टाइम है मोस्टली, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस ऑल्सो. And if you want to connect with me, you can connect with me over my email. You can connect with me on Facebook, and you can directly send your questions to me on the comments section of this YouTube video as well as on the Facebook video. So please start studying with a cool head. जो भी सवाल आपके मन में आते हैं उनको राइट डाउन करो. जो ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उनको आप अपना पॉइंट वाइज नोट कीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज पर्टेनिंग टू एनीथिंग, जस्ट जॉट देम डाउन, आस्क मी. हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पूछ सकते हैं. सिंस द बुक इज़ इन इंग्लिश, आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ मोस्ट ऑफ द टर्म्स इन इंग्लिश. लेकिन अगर किसी को उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी पार्ट सब्जेक्ट मैटर का या टॉपिक्स का, आप मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हैं. सेपरेटली मैं शॉर्ट्स भी शेयर करूँगी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और आप डेफिनेटली कभी भी अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी. दिस इज़ अर्पिता घोष, coach and consultant, and we are starting with the basics of commerce, which starts from the class 11th, and I am referring to the NCERT course. अगर इसके अलावा किसी को कोई स्टेट बोर्ड के कोर्स में भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे अपने टॉपिक लिख के भेज सकते हैं, and I'll try to help you out. Thank you so much. Please keep sharing this video. Please do like and subscribe. Thank you.